Good evening everyone. Welcome to the solutions for the 12th video on homework portal. Okay, so let me move on further. Let me share my screen. Yesterday I had posted 5 questions. The solutions for this are being shared over here. So this is my 12th version. Right, where is it here? Okay, so HW12, that's what you can recognize. Right, so if you want to view all the videos that I had posted so far, you can look into this website, okay, which includes the misconceptions in physics. And if you want to know only the videos to the homework portal, you can look into this. Every day at 3:30 p.m., you will be getting the questions, and every day at 7 p.m., you will be getting the solutions for these questions. Okay, so now let us move on to the solutions for the yesterday's question. Today it is 6:35 already. Let me see whether I will be able to do it or not. Okay, let me try to. Right. Now, the first question comes here. So currently we are focusing only on mechanics, and maybe another 2-3 weeks, not 2-3 weeks, I don't know, 1 week after this, I will be moving on to the next chapter. The next chapter that will be moving on would be circular motion and gravitation. And while we discuss circular motion and gravitation, this time I have thought of putting the theory also, okay, creating a video for theory, okay, and along with it trying to solve the problems also. It all depends upon my time, but let me make it as a commitment this time and let me try doing it. Many students are asking me for this international curriculum, why can't you do something like this? Let me try it out my best to do it. Okay, so a compressed spring, okay. A compressed spring is used to launch an object along a horizontal frictionless surface. Okay. Launch an object using a horizontal frictionless surface. So there is a horizontal frictionless surface like this. Horizontal friction surface like this. The object is resting here. This is the spring. When the spring is compressed to a distance x, now what you do is you push it. Initially the spring was like this. Okay, you push it from here, you push it like this, and then it got compressed here. Okay, so this is my first state. And then released. The moment you came over here, now what you do is you compress it like this, and then you release it. You remove your hand. What will happen? The spring will now go backwards, sorry, frontwards, right? It moves outwards, or it will expand. It will expand. And then the spring will now move through a distance x. So it will start moving through a distance x. Move a distance x. Oh, that's already given. Okay. So yesterday I had a query saying that, sir, you are teaching everything in English, and can you please put it in Hindi? So people want me to talk in Hindi. My Hindi is not so good, but anyways, if nobody is going to pay me for wrong Hindi or going to cut my salary for wrong Hindi, doesn't matter, I can do it, right? So let me try my best. I have also seen in my current school also that if I speak in the native language, people would be very happy. But only thing is I'm worried is, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो कुछ दिक्कत हो जाएगा, उनको मालूम नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने सोच रहा था कि क्यों हिंदी में जाना है. ठीक है, आज से हम हिंदी में ही शुरू कर देंगे. थोड़ा थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलके शुरू करेंगे. अच्छा, तो ठीक है. सो अगर ये इधर एक फोर्स लगेगा तो ये स्प्रिंग तो कंप्रेस हो जाएगा. अगर ये स्प्रिंग इतना कंप्रेस हुआ है, दिस स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, तो क्या करना है मुझे? द मोमेंट आई रिलीज इट, तो क्या होगा? दिस स्प्रिंग विल नाउ स्टार्ट मूविंग लाइक दिस. ठीक है, नाउ इट विल मूव बाय अ डिस्टेंस. नाउ द क्वेश्चन हियर इज दैट फाइंड व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन, what is it? What is the distance which should be moved by the spring when compress this object to leave the spring at v by 2? Okay, अगर हम कितना इस स्प्रिंग को कंप्रेस करना है तो ये ऑब्जेक्ट स्पीड, ऑब्जेक्ट का स्पीड v by 2 होगा. यही तो पूछ रहा है. सो कैसा करेंगे इसके लिए? सो व्हाट वी डू इज, फर्स्ट जब हम इस ऑब्जेक्ट से स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है, सो व्हाई शुड द स्प्रिंग रिलीज दिस द मोमेंट इट इज रिलीज्ड? Okay, why should the object move like this? Because okay, the object is being given a force here. अगर हम फोर्स से बात कर सकते हैं, या आई कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द एनर्जी. तो क्या हो रहा है इसमें? एक एनर्जी दे रहा है. ओके, दिस इज गिविंग आउट सम एनर्जी इन दिस डायरेक्शन. इसका एनर्जी क्या है? व्हाट इज द एनर्जी गिवन बाय इट? हाउ डू आई नो? इसका एनर्जी है स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट इज द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग? स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर. ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी ये इस ऑब्जेक्ट को दे रहा है.
इसके लिए अगर ये ऑब्जेक्ट, ये स्प्रिंग इतना रिलैक्स करेगा, जब ये बाहर आएगा ना, ये स्प्रिंग से जब छूटेगा ना, तो इसका वेलोसिटी v है, इसका मतलब है इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है। सो अब इससे क्या कंक्लूजन ड्रा करना है हमें? इससे हम कंक्लूजन ये ड्रा करते हैं कि हाफ kx² जो एनर्जी है स्प्रिंग का एनर्जी, ये जब ऑब्जेक्ट को दिया था, ये सभी फुल एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दिया, इसके इसके मुताबिक इसका क्या हुआ, इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो गया। ओके, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, ये हाफ और ये हाफ कैंसिल करेंगे हम, इससे हम स्प्रिंग कांस्टेंट डिटरमिन करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, हमें m डिवाइडेड बाई mv² डिवाइडेड बाई x² होगा स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अभी हमको स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया। जब हम स्प्रिंग कांस्टेंट तो आ गया, नेक्स्ट क्या करना है हमें? तो नेक्स्ट इज वी नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड विद द स्प्रिंग which the spring must be compressed for the object to leave the spring at v/2। तब क्या करना है हमें? We will write half kx-² is the spring compression that I need to give. Okay, just a moment, कुछ हो रहा है यार, just give me a moment। What is this? I think now it's fine. Okay, acha, so therefore now if I compress the spring by distance, sorry, what is happening to this here once again? एक minute, dear friends. Okay. If I compress, okay, now it's working. Yeah. If I compress this spring by a distance x dash, which means अगर ये spring इतना तक होगा, okay, now I'm going to compress it only by a distance x dash. तब क्या होगा? So it will have only a small part of energy which is being stored. The larger the compression, larger the energy. Smaller the compression, smaller the energy. तो इसके लिए अगर इतना कंप्रेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट को भी ये स्प्रिंग थोड़ा ही एनर्जी देगा। इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट इट विल मूव विद अ lesser velocity. What do we need here? Lesser velocity v/2, right? So therefore, let us say we are going to compress it by a distance x dash over here, and this will go, the moment this has been released, this energy will be made to move this object by a velocity equal to v/2. In other words, it should be half m into kinetic energy would be v²/4, right? v/2 the whole square. Now what we do is we will substitute the value of k. We have got the spring constant k, which will not change, right? So this I will write this as, I'll cancel this half once again. Now for k, I'll substitute this as mv² divided by x² is equal to mv² divided by 4. Okay, so m and m goes away over here, and we have this v² and v² also goes away. क्या कर दिया मैंने? हाँ, ये x dash square है ना, इसको छूट दिया, x dash square by x² equal to 4. In other words, x dash is equal to x² by 4, x dash square is equal to x² by 4, और x dash is equal to x/2. इसका मतलब है you just need to compress it only by half the distance of what it was compressed. So the right answer here is B. Okay, now next let us go on to the next one. Three forces acting at a point in which diagram is a point in equilibrium. Now ये तो बहुत मुश्किल सवाल लगता है. Okay, it's not so difficult, but let us understand. अरे बाप रे बाप, ये तो 24th होना है ना, I made a mistake here. ठीक है, इसको करेक्ट कर दूंगा. ठीक है, in which diagram is a point in equilibrium. ये एक मिनट इसका करेक्ट तो कर देंगे ही. अरे वही, there should be a mistake in something. हाँ, अगर सब कुछ कर सकते हैं then why should we do a mistake? 23rd सब कुछ 23rd है ना. हाँ ठीक है, now it's fine. I'm sorry, this is right only. टिक मार दो उसको. ठीक है, so now three forces acting at a point, which diagram is a point in equilibrium. Equilibrium का मतलब क्या है? The total forces acting on the particle should be 0. अगर ये देखो, ये F2 है, अगर ये थीटा है, इसका कंपोनेंट इस तरफ से क्या होगा? F2 cos थीटा होगा. और अगर ये अल्फा लगेगा तो इसका क्या होगा? F1 cos अल्फा होगा. और इधर एक कंपोनेंट लगेगा और इधर भी एक कंपोनेंट लगेगा. So now you see along the y-axis, this is not equal to this one. See, this length is smaller. ये तो छोटा है, ये तो बहुत बड़ा है. So इसीलिए इसका net force 0 नहीं होगा. So ये this is a wrong answer. और अगर यही लॉजिक इसमें अप्लाई करेंगे, ये भी तो गलत है. अगर यही लॉजिक इसमें अप्लाई करेंगे, तब देखिए ना,
अगर ये F2 है तो इसका क्या होगा, ये थीटा होगा और ये अल्फा होगा। तो F2 cos theta could be like this, F2 cos theta could be like this, F2 cos alpha would be like this। अगर ये केयरफुली नोटिस करेंगे हम, थीटा और अल्फा एक ही जैसे लगता है ना, द एंगल्स अपीयर टू बी सेम। सो देयरफॉर you can now say that if these two are equal, I can now say this should be equal to 2 times, now let me put this as F1 here, 2 times अगर ये एरोस भी एक ही है, लेंथ एक ही लगता है, तो 2 टाइम्स F1 cos थीटा लगेगा इसमें। एंड ये देखिए वर्टिकल कंपोनेंट, ये जो हाइट है, अगर हमने ये अज्यूम कर लिया ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है और ये एंगल्स इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल ही होना चाहिए। इफ these two are equal, now these two will cancel each other। So as a result of this, now if F3 can be equal to 2 F1 cos theta, but this is not a condition as observed in the rest of the diagrams. So this is correct and this is definitely incorrect, right? So I hope you got this point, and as a result of it, C is the correct answer. Okay, now let me move on to the next one. A student is verifying the equation x is equal to 2 lambda y by z. The percentage uncertainties are given like this. What is the percentage uncertainty? ठीक है, आपको पता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगा। परसेंटेज अनसर्टेनिटी तो पहले आपको रिलेटिव अनसर्टेनिटी दिखाना है। फाइंड आउट द रिलेटिव अनसर्टेनिटी कैसे करना है, डेल्टा एक्स बाई एक्स करना है, क्योंकि हम वही डेल्टा एक्स बाई एक्स, क्योंकि इधर पूछा गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी एक्स। सो देयरफॉर पहले हमको डेल्टा एक्स बाई एक्स करना है, बाद में उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अभी ये कैसे निकालना है, तो क्या करेंगे हम, इसको x इज इक्वल टू 2 लैम्डा y डिवाइडेड बाई z, ये पैसे पहले ऐसे लिखेंगे, और देन वी विल डू डेल्टा x बाई एक्स। डेल्टा x बाई एक्स क्या होगा, हमें ये सभी को अनसर्टेनिटी निकालना पड़ेगा, रिलेटिव अनसर्टेनिटी। लेट अस डू इट फॉर ईच एंड एवरीथिंग। सो लेट अस राइट इट फॉर 2 आल्सो, दिस इज आल्सो ए कांस्टेंट, राइट? So delta 2 divided by 2 plus delta of lambda divided by lambda plus delta of y divided by y plus delta of z divided by z। ठीक है, और अगर क्या 2 चेंज होगा, what is delta? Delta refers to change, तो delta of 2 does not change, so this becomes 0। और delta lambda, lambda चेंज हो रहा है क्या? Lambda is a constant, lambda is constant? No, lambda is not a constant, lambda तो uncertainty है इसमें, तो इसमें क्या रखेंगे, इसमें 0 प्लस डेल्टा बाई लैम्डा, डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा तो 10% है, इसका 10 लिख देंगे। डेल्टा वाई बाई वाई, व्हाट इज डेल्टा वाई बाई वाई, प्लस आर माइनस 0.05%, 0.05% प्लस डेल्टा जी बाई जी क्या है, प्लस आर माइनस 5%। ओके, एंड मल्टीप्लाई दिस ऑल बाई 100। अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब तो अनसर्टेनिटी इन परसेंटेज बनेगा, नहीं तो रिलेटिव अनसर्टेनिटी ही होगा ना। ओके, ऐसा कर देंगे। ठीक है, अगर इधर भी 100 मल्टीप्लाई करेगा, इधर भी 100 मल्टीप्लाई करेगा, तो आई कैन राइट दिस डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इंटू 100, डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100। तो हम ये सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, इधर तो प्लस आर माइनस है, फिर भी हम प्लस ही लिखेंगे और माइनस ही लिखेंगे। देन फाइनली व्हाट आई गेट, आई कैन राइट दिस एज इक्वल टू 10 प्लस 5 15, 15.05%। यही तो आंसर आएगा। पर ये आंसर देखिए, इसमें 5%, 15%, 25, 30, तो इसमें कौन सा राइट है? ओके, ये पूछना है। देन व्हाट यू डू इज, नाउ यू सी दिस हैज इन ऑल दिस, जस्ट अ मिनट, व्हाट इज हैपनिंग टू दिस, अरे कुछ गड़बड़ है क्या? एक मिनट दोस्तों, जस्ट अ मिनट यार, क्या हो रहा है इसको, देखो। अच्छा, आ गए। ओके, सो फाइनली व्हाट इज दैट यू गेट एन आंसर इक्वल टू 15%। तो राइट आंसर है बी। ठीक है, इधर तो 15.05 आ रहा है, बट इधर तो you cannot put, for that matter you cannot take 25, 30 and so on। There are 4 options given, nearest option is to be 15%, इसीलिए हम 15% को ही right option मान देंगे। ठीक है, then a student models the relationship between the pressure P of a gas and its temperature। P, that is the pressure और temperature के relationship लिखा है कि P equal to x plus yt। The units of P are in Pascal. P is in Pascal. Units of T are in Kelvin. What are the fundamental SI units of X and Y? यही पूछा है। ठीक है, पहले हम ये क्वेश्चन को लिख लेंगे। P is equal to X plus YT. This is what is given. ठीक है, हमें क्या पूछ रहा है? What is the unit of X and Y? ठीक है, पहले फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो, शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है इसमें? अगर ये इक्वेशन सही है
तो इसका यूनिट जो भी लिख रहे हैं, सो इसका यूनिट जो एक एक टर्म है ना, उसका यूनिट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो पहले ये देखेंगे, अगर व्हाट इज द यूनिट फॉर दिस प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, है ना। वो फोर्स के लिए क्या यूनिट है? फोर्स तो द केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर है। तो इसका मतलब है टोटल यूनिट इज केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। सो केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर कौन सा है? इधर है। सो इसलिए ये दोनों तो गलत है। ठीक है, अभी इसमें से एक को चुनना पड़ेगा आपको। सो कौन सा राइट है, यही देखना है। और अगर मैं केल्विन इसमें डाल दूं, अगर y का यूनिट अगर केल्विन है, केल्विन टू द पावर ऑफ -1 है, तो इसका तो केल्विन हो जाएगा, तो बाद में ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर तो यूनिटलेस हो जाएगा, तो एक गलत है। सो दिस शुड बी द राइट आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। अगर आपको एक ही स्ट्रेट लाइन में जाना है, दैट इज अगर आपको फ्रॉम द स्क्रैच जाना है, ये आंसर लाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? y इंटू टी, y इंटू टी का यूनिट क्या होना है? यही होना है। सो इसके लिए हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और यूनिट ऑफ y वुड बी केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर केल्विन बाई केल्विन। टेम्परेचर नीचे आ जाएगा तो केल्विन लिख देंगे, और इन अदर वर्ड्स ये तो केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर केल्विन आ जाएगा। ठीक है, सो फाइनली वी गेट दिस आंसर। सो द आंसर इज राइट। राइट, नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। स्काई डाइवर इज ट्रैवलिंग इज फॉलिंग एट टर्मिनल स्पीड। अरे ट्रैवलिंग नहीं आएगा यार ट्रैवलिंग आएगा तो क्या इंजन है उसमें? है वो तो नीचे गिर रहा है। Okay, sky driver is firing at a terminal speed when she opens the parachute. ठीक है, what are the directions of her velocity vector and the direction of the acceleration vector before she reaches the new terminal speed? यही क्वेश्चन है। ठीक है, सो पहले what are the directions of her acceleration vector? velocity vector क्योंकि ये तो नीचे ही होगा। क्यों नीचे है? अगर वो नीचे आ रही है, ओके, सो इफ ही और शी इज कमिंग डाउनवर्ड्स, देन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो डेफिनेटली यही है। देन व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन वेक्टर? अगर ये नीचे आ रहा है, देन व्हाई शुड इट बी कमिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी? क्योंकि बयानसी फोर्स ऊपर है और mg फोर्स नीचे है। ठीक है, and as a result of this, now because of inertia he is coming downwards, and as a result of it you get this. Now if suppose if she reaches from one terminal velocity to another terminal velocity, what does it mean? That means your acceleration vector, see if the acceleration vector तो कभी भी ऐसा ही है, तो क्या होगा? ये टर्मिनल वेलोसिटी नहीं रीच करेंगे वो, तो एक्सेलरेशन तो बढ़ता ही जाएगा, है ना। अगर इधर तो एक्सेलरेशन वेक्टर नहीं है। ओके, सो ही सेज दैट इट रीचेस वन मोर टर्मिनल वेलोसिटी। पता है क्या लिखा है? ओके, न्यू टर्मिनल स्पीड। व्हाट इज न्यू टर्मिनल स्पीड? टर्मिनल स्पीड मतलब इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, सो देयरफॉर अगर ये न्यू टर्मिनल स्पीड रीच करना चाह रहे हैं, सो देन यू शुड सी टू इट दैट द अर्लियर वेलोसिटी it was accelerating, but it slowly, okay, the acceleration was in the upper direction. क्यों upper direction है? Because initially let us say, so this was like this, mg force was like this was like this. अगर ये new terminal velocity reach कर रहे हैं, then this mg force, this buoyancy force now increases like this, mg force remains the same, but just before it reaches terminal speed, then this net force would have been larger as compared to this, and hence you see the direction of the acceleration vector, net acceleration vector, is nothing but the upward direction. तो आंसर कौन सा राइट है? आंसर तो सी राइट है। ठीक है, सो thus we have come to the end of the today's session. Thank you friends for watching this video. Please do comment पे लिखिए कि हमारा हिंदी कैसे है, कैसा है या कैसी है, आई डोंट नो। ठीक है, जो भी मैं मूवी देखता हूँ इससे थोड़ा थोड़ा मैंने हिंदी सीख लिया है, बट nevertheless we'll definitely try to improve on Hindi, because Indian languages, you know, many of them would love to learn subjects from their mother tongue or from their native languages, as I know. So इसके लिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलके बात करेंगे। ठीक है, so it would be much more, learning would be more made easier. ठीक है, happy learning, and if you really like this video, do share and subscribe to my channel for more updates. Thank you once again.